you will see a drop down menu. At the bottom, you will see something called as hide non-video performance, right? So try to do that on any blank box without any video. Go on the top right corner, click the three buttons in the drop down menu, click hide non-video participants, and you will see magic. All those without the video will disappear and only I will be visible to you and Superman, of course, and Rachna and Priyanka. Yeah, right, superb. Let's try and do We that. did that. This is required to see the performance section. All right, so when we are watching the performance, this will help us see that. On the top right side, you can see something called as speaker view and gallery view. In gallery view, you would be able to see everyone who is present. In the speaker view, you see only the person who is speaking. All right, so everyone can come back on video. Turn your video on at the count of 3. 1, 2, 3. On video, on video. Superb. There are many participants here in the Zoom. Okay. Yes, Priyanka, is that fine? The instructions are fine. Okay, yes, Suraj sir, thank you. Now, Thank because you. it's an art integrated learning workshop, we cannot sit for long because it's a theater-based workshop. We have to all get up for Go, something everyone! Yes, Jolly, yes, jolly, yes. jolly, everyone. everyone. Please stand up. Please stand get up. Shut up, shut up, shut up. Yes, Yeah, there are stand lots of educators, teachers, and children. Everybody has to participate equally. Yes. We all Let's charge ourselves up, everyone. Get Come up on, from come the on. chair. Priyanka, Up, join up, us. up, Get up from the chair. Push the chair Very good. behind. Come on, parents. Come on, teachers, Come on. everyone. If you have your phone devices, keep it Stand up. somewhere. Keep your hands free. Okay, Superb, let's start. superb. Now, everyone, Everyone. put your hands in the front. Hands in the front. Hands in the front and shake your Shake, hands. shake. Fast, fast, Everyone, fast. take your hands. Quick. In the front, in the front. Superb, superb. Come on, everyone. This is Very position good. 1. Position 1, remember. One. Superb. And One. now pull your hand towards you, towards the sides, and again shake. Shake. This is position 2. Position 2. Two. And now take your hands to the back and Hello. shake. Yes, this is position. This is position 3. Live on. Three. Remember the position. And now hands up top to the up side and shake. This is position 4. Remember. 4. And now back to 1. One. Everyone. Two. Side. Three. Behind. Four. Up. One, two, three, four. Three. Everyone, position 3. Three. Come on. And position 1. What? Come on, 1. Everyone. And Faster. position Very good. 2. Two. And 4. Four, everyone. Come on. Yes. Superb. Now let's do a combination of 1 and 3. Combination of one position and three. 1 and 3. 1 and 3. 1 and 3. Good. Extra together. 1 and 3. 1 and 3. Let's now do all of them together. 1, 2, 3, 4. Yes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Together. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. Thank you. Superb. Wait, don't sing. Not yet. We have to do a song together. Yes. Oh, yes. Please, everybody say hi to each other. Everybody say hi to somebody in the right. Come on, in the right. Hello, how are you, dear friend? Hello. Ask them, how are you? Hello. To the left. How are you? To the left. To the left. Hello. कोई आपके ऊपर है. Say hello. How are Hello. you, dear friend? How are you? और नीचे. Hello. How are Hello. you, dear friend? Hello. Yes. So let's start the song. Yes. Okay, so let us start with the song. And the first line of the song is, hello, how are you, dear friend? Okay, so this is the song. And I will sing the song, and Suraj and Roshan can do the actions. Please observe and unmute and sing along with me. Okay, so everyone, 3, 2, 1, go. Hello. Hello. Hello.
How are you, dear friend? How are you, dear friend? You have to sing, everyone. I hope I I hope hope you are happy and fine. you you are happy and fine. fine. Very good. Now clap in front of the screen and say, clap your hand. Clap your Your hands. Now you're going to turn around and say, clap your hand, and then you're going to jump and say, tap your feet Tap Tap your your feet. feet and turn around. And and turn turn around. around. Yes, you have to turn around. No doing cheating. Turn around, turn around. Everyone, turn around. Jaldi, 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 Woohoo! jaldi. Superb, superb, Good, good, everyone. good, good. Very good, very good. Priyanka, your chair. Okay. Ruchi Arora, very good. Ruchi Arora ने बैठे बैठे turn कर लिया Very है. बहुत ही बेहतरीन. Turning the Very good. camera. Okay, thank you, Virat sir. That was good, superb. Thank you. Yes, ma'am, please. All right. So that was fun. Clap your hands. Yes, that was fun. So give them a big round of applause. How much fun you can write on your chat. So you see, now a teacher is speaking. So education, despite being a serious business, needs to be imparted through fun classroom activities. Likewise, a teacher can use several innovative teaching methods for teaching and learning in the classroom. The conventional way of teaching the students creates boredom for subjects. Often students refer to classrooms as boring rooms and many a times refrain from attending school too. This is majorly due to the conventional teaching methods of the teacher or in the school. But now the situations can change. Be inspired by our art integrated learning, a pedagogical tool in education. This is not our idea of promoting zero investment based teaching solutions, but it has come from the CBSE board. Many teachers are converting the classrooms into a zone of happy, content, and energetic learners, advocating learning through games, art, and theater, customizing and integrating, and that grab your eyeballs from every corner of the class as we did today. So, my name is Kusum Kanwar. A little bit about myself. I'm the managing director of Kangaroo Kids International Preschool, Kandivali, founder and CEO of Adapt Skills, a learning and development organization. I'm the National Core Committee member of APER. APER stands for Association for Primary Education and Research. I'm the ambassador for principals at ECA, that's Education, that's Early Childhood Association. I'm also the former principal of Billabong High International School, Malad and Santa Cruz. So you see how much fun our kids at Billabong, Malad and Santa Cruz and Kandivali are having. And today I will be a host and the moderator for this highly significant topic, art integrated learning, a creative pedagogical tool. And why did we choose this topic today? Thanking Hello Kids and Riverstone Schools for this platform, in gratitude to Mr. Preetham Agarwal for creating such an opportunity to help us take the session to integrate art and learning, a creative pedagogical tool in education. Now, I quote this very vital information from CBSE 2019 document on art integration in schools. Because the National Curriculum Framework 2005 has recommended art as a subject at all stages, covering all four major spheres. That is your music, your dance, your visual arts, and theater. So we must bring the arts squarely into the domain of the curricula and the curriculum, infusing them all in the areas of learning while giving them an identity of their own at relevant stages. It also states the importance of Indian heritage craft, both in terms of economic and aesthetic values, should be recognized as being relevant to school education.
So there has to be joyful learning for teachers and for principals and for students as well. So it is recommended that schools must adopt and adapt arts in the daily lesson plans. So now, along with the Rangbhumi Theatre group and artists to create this art integration education for all of us today, and all its forms as an integral part of teaching, learning, we showcase how art integration education is a cross-curricular approach to teaching and learning based on collaboration between the teaching of subjects with the teaching of art, that is visual or performing art, etc. Introducing Ms. Chetna Mehrotra, the founder of Rangbhumi. Chetna, can you just wave out to everyone? Oh. Right here, and who is an applied theatre practitioner, a drama-based learning facilitator, a practitioner of TO, that is Theatre of Oppressed, playback theatre, and a theatre in education, that is TIE. With a team, where's the team? A team of zealous and ardent young men. Where are you, young men? Hello. Hello. Namaste. Yes, who want to bring art integrated education to everyone they can reach out to. So here is Viral. Viral, where are you? Roshan and Suraj. So as we begin today, the Gurudev Rabindranath Tagore's words resonate. So when I see the universe through my songs and through the activities that I do, I recognize it. Then only I know it. So we begin with the literature on Habib Tanveer, whose plays and stories are a part of our grade 9, 10 curriculum at the CBSE. Over to you, Rangbhumi. Thank you, ma'am. That was a great foundation laid for our performance right now, which we are going to integrate with learning right now. So, as ma'am said, CBSE curriculum has or the guidelines have clearly spoken about art integrated learning. So, I'm going to now invite all of you to watch this performance. And post the performance, we will come back to you and ask you how did you feel and what happened. So, for this, I'm going to invite you all to please put your videos off so that we can create a virtual stage here. If you put your videos off, we can see a performance. Now, well, let me also tell you that Habib Tanveer's literature called Kartoos is a part of grade 10 CBSE curriculum, and CBSE guidelines at chapter 4 clearly tells us that art and culture through theater and storytelling and visual arts are an important part of any child's growing up years and life. So art and culture of any state in India is very important. And let me tell you, Habib Tanveer, as a theater activist, he promoted local art and culture of Chhattisgarh. And he's also contributed, his plays are a part of the curriculum too. So we are very proud to introduce Habib Tanveer's story and the local culture of Chhattisgarh in the performance that you're going to watch now. So please kindly put your videos off so that our actors can come on the stage. And if you're on laptop, put your videos off. You would see a freeze window, click 3 dots and say hide non-video participant. Hide non-video participant. And if you're on a phone, there is an option called meeting settings. If you click on that, it'll give you hide non-video participant so that we can create a virtual stage. So on the laptop, it is the 3 dot, now hide non-video participants, and on the phone, you can see Roshan's, I will spotlight Roshan's, yes. So hide non-video participants on the phone. If you can see, you can click on that to have a great view of this performance. Thank you. So I'm going to switch my video off now. And everybody, put your video off, please. Please put your video off. आप option देख लीजिए. Video, stop video का option होगा, आप वो दबा दीजिए. Stop video का option. Stop video option and hide non-video participants. So, ladies and gentlemen, Habib Tanveer, and you can, yes, Habib Tanveer is going to
we are going to showcase his life story and how he contributed to the culture and arts of Indian civilization. Yes. Veena, yes. Veena Nayak, can you please? Yes, thank you. Okay. So, namaste everyone. Just So today I am going to yes. Kirti Raj, yes, please go. Yeah. So today I am going to share a story about Habib Tanveer. Now you must be wondering, who is Habib Tanveer? Ye hai kaun? So Habib Tanveer is considered as one of the great Indian theatre practitioner, or you can say a personality in India. So talking about him, I will just share a small story. So Habib Tanveer was born in Raipur during when India was fighting against the Britishers. कब किया था याद है? 1947 से पहले जब इंडिया फाइट कर रहा था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तब रायपुर के एक शहर में हबीब तनवीर बॉर्न हुए थे. हबीब तनवीर के जो पापा है, पिताजी बहुत, वो उनको आर्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं था, थिएटर आर्ट्स, ही यूज्ड टू हेट इट. बट हबीब के जो चाचा हैं, he used to like theater. In fact, he was a theater actor as well. So हबीब को बचपन में लेके जाते थे रात को चुपके चुपके, क्या दिखाने? थिएटर दिखाने. और तब नाचा थिएटर जो है बहुत फेमस था in छत्तीसगढ़. So he used to see these kind of folk theater and he developed the interest for theater. और जैसे जैसे हबीब तनवीर बड़े हुए, he grew up, he started liking theater. He started writing poems as well. उर्दू में पोएम लिखते थे, हिंदी में पोएम लिखते थे, and he wanted to learn theater in a theatrical way, in a more better way. So he decided to go to London. Why? Because there was RADA. ये RADA क्या है? RADA is one of the theater institutes in London. So he went there in London to study one of the course. अब RADA को जानने के लिए we will invite Mr. Thomas from RADA to talk about what is RADA and yes. So Mr. Thomas, you're here. Namaste. Namaste. So Mr. Thomas, can you please share why, like, what happened when Habib Tanveer came to RADA in your prestigious institute? Oh, yes. That young man, Mr. Habib, he came to RADA in 1955. RADA is Royal Academy of Dramatic Arts. Okay. And we are a legacy in theater. We have acting courses, directing courses, many, scripting, stage design, everything. But, this young man, we taught him everything. We taught him W, accent, every possible thing. But he said, what you're teaching me is of no use. Oh. Because when I go to my community, to my people, it is of no use. This won't help me. So he said, I don't want your course. I will leave the course and I will do something that will help my community, my people. And he left. Oh. And we told him, if you want to leave, you can leave, but we won't give you the certificate. And he left. Okay, thank you, Mr. Thomas, for coming here and sharing the story here. So that was quite strange, right? Like Habib Tanveer, he left the course from the prestigious institute because he believed that theater, जो वहाँ कर रहे थे, London में कर रहे थे, that is not related to his own community. So he thought of leaving that. तो आगे किया क्या उन्होंने? He wanted to meet one important person. He felt that if he meets this person, he will get to learn theater more. And this person was staying in Germany, and his name is Bertolt Brecht. So let me invite Bertolt Brecht here so that we can know why he is so famous and why Habib Tanveer wanted to meet. Oh, here he is. Hello, sir. Hello.
Sir, we would like to know about you, sir. Why you are so famous in Germany? What is that? What kind of work that you do? Sure, Yes, sir. sure. Yeah, to begin with, well, my name is Eugene Bertolt Brecht, and I was born in the year 1898 in the then German Empire in Augsburg. Well, I have written lots of poems and plays and stories, and what I believed in is that the audience and the spectator, they should not get emotionally too attached with the characters they see on the stage, and Hmm. hence I have created plays which are related to the lives of the community, which is related to the people, and that's what I have tried to do, bringing or showing the people what the reality is. And my motive has always been to remain German to the core, and that's what I do. Oh, phew. Yeah, this is what happened actually. He went just suddenly. Habib Tanvir, when he wanted to meet Bertolt Brecht, so there was a sudden death of Bertolt Brecht, and that's why Habib Tanvir was not able to meet Bertolt Brecht. But he knew that he can see all those plays which Bertolt Brecht had created in Germany. So he stayed in Germany and saw all those kind of plays which Bertolt Brecht had created. He spent 8 months there. And one thing he found common in all of them, that was Bertolt Brecht remained German to the core. Yes, so that was an inspiration which Habib Tanvir felt, and he wanted to become Indian to the core. And that's why Habib Tanvir came back to India and he came and worked with Chhattisgarhi folk artists. Yes, those Nacha theater artists जो बचपन में वो देखा करते थे, उन्हीं के साथ वो अभी काम करना चाहते थे. So he started working with them, wanted to be core Indian to the core. And let me invite one of the most important person in Nacha folk theater artist, Poonam Tiwari ji. Let's clap for her. Poonam Tiwari ji. Oh. एकर का भरोसा चोला माटी के रे चोला माटी के चोला माटी के राम नमस्कार नमस्कार. नमस्कार 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 पूनम तिवारी जी, आपका यहाँ पर कैसे बहुत हैं? स्वागत है. हाँ बहुत बहुत धन्यवाद. कैसे हैं सब लोग इधर मुंबई में? बहुत बढ़िया. बस यहाँ पर थोड़ी बारिश हो रही है. यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो कि आप तो जानना चाहेंगे कि ये हबीब तनवीर जो है उनका अरे क्या स्टोरी है. आप अरे 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 हबीब साहब का बात ना करिए. अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं इस समय. हाँ. और क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का रायपुर वाला अरे आप सुनिए हमारी बात. ये जो आप लोग बड़ा बड़ा कलाकार करते हैं ना, विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग देता है, हाँ, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. हबीब साहब बोलते थे ये पान वाला है तो पान वाले को स्टेज पे पान वाला ही बनाइए. अच्छा वो और क्या, और पान वाला क्या फूल वाला है तो फूल वाला स्टेज पे फूल वाला बनेगा. हाँ अभी हम लोग सुना है कोई कुसुम मैम आया है इधर, वो हाँ. बोल रहे हैं कि सीबीएसई का क्या बोलते हैं कक्ष में विद्यालयों में कारतूस का नाटक चल रहा है हबीब साहब का. बच्चा लोग पढ़ रहे हैं, नया नया कलाकारी जान रहे हैं. अरे हमको बहुत क्या बोलता है, थोड़ा इंग्लिश हमको आता है, प्राइड महसूस हो रहा है कि बच्चा लोग कक्ष में आर्ट कल्चर पढ़ रहा है. सीबीएसई वाह वाह. तो बिल्कुल हम तो जो बिल्कुल. है हम लोग कलाकार हैं. हम लोग का ये है कि ट्रेनिंग वेनिंग नहीं है, जो जैसा है वैसा ही करिए रंगमंच पर. हाँ, ये सही कहा, बहुत बढ़िया कहा आपने. बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी यहाँ पर आने के लिए. बहुत बहुत बढ़िया. हम लोग देख रहे हैं टीचर लोग आ रखा है इधर, डांस वांस भी कर रहा है. हाँ. अब कक्ष में यही होना चाहिए, फुल क्या बोलता है जॉय होना चाहिए, जॉय. चलिए हम लोग जाता है, हमारा हाँ. रिहर्सल का टाइम हो रहा है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. गाना गा लीजिए हमारे साथ. चोला माती के हेरा एकर का भरोसा चोला माती के. Okay, so that was पूनम तिवारी जी, जो कि फोक थिएटर आर्टिस्ट है, नाचा थिएटर आर्टिस्ट है. हाँ, उन्होंने जिस तरह से कहा कि हाउ द रियल लाइफ कैरेक्टर्स लाइक जो फ्रूट वेंडर होते हैं, जो फूल वाले होते हैं, पान बेचने वाले होते हैं,
वो जो रियल लाइफ में करते हैं, दे कम ऑन द स्टेज एंड दे परफॉर्म द सेम थिंग. वो अपनी कहानी, अपना जो कैरेक्टर है वही निभाते हैं. तो ये है हबीब तनवीर की खासियत. जो रियल है वही उनको लेके आते हैं और उनको परफॉर्म करवाते हैं. So this was a small story of Habib Tanveer ji, and that's how he is so famous for his community work, like how he brings community to the theater. Yes. So thank you so much for listening to Habib Tanveer's story. Thank you. So thank you everybody. You can come on video. Yes, yes. Okay. So सब लोग वीडियो पे आ जाइए. तो कैसा लगा? कैसा लगा? अरे बोलिए, बोलना है. अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगी कैसा लगा, आप लोग गा के बोलेंगे अच्छा लगा. ठीक है. अरे 1 2 3 4. कैसा लगा? अच्छा लगा. अरे कैसा लगा? अच्छा लगा. अरे कैसा 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 लगा? अच्छा लगा. वेरी गुड. अभी ध्यान रखना हबीब तनवीर के बारे में जब पढ़ाना और पढ़ना. थैंक यू. Thank you. So let's give them a big round of applause. So as you see, art education is not only relevant for developing creativity and appreciation of art among students, but also necessary for inculcating art-based inquiry skills in students. So it has to have music as well. So do not delineate music, art, and theater. We don't have them into compartments. That's the reason we are also having a lot of music here. So why does art integration work? Art integration teaches us, using these teaching practices that have been shown in the brain-based research to improve comprehension and long-term retention. So in an age of tweets, hashtags, and chats, the lack of literature and poetry and drama should be, in fact, the perfect art form for students today. I hope you all agree. If you agree, raise your hands and say, yes, we agree. Okay, tie this in with crossover, with dance and theater, and it is something that the students are able to relate to. Now, let us go back in history with Tanaji, because Tanaji's a short performance on critical thinking and problem solving capabilities where audience intervention will happen. All right. So for example, when students create stories, there are pictures or other non-verbal expressions of the content that they're learning, a process researchers call elaboration. They are also helping to better implant the information. So on to you with Tanaji, Chetna Rangbhumi. So namaskar बंधु बांधव, वापस फिर आ गए हैं. We are back again, and as ma'am rightly said, definitely now this performance, आप लोग पॉपकॉर्न और चाय तो पी रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मतलब चाय पी रहे हैं. But here we would require your intervention, your thoughts. ये नहीं अभी देख के ताली नहीं बजाना है. We will invite you here and ask you your thoughts. Acting नहीं, सिर्फ thoughts share करिए. और acting आती है तो थोड़ा additional है, मजा आएगा. So chapter 6 and 7 of CBSE talks about how history of rulers and ancient buildings and ancient rulers and fight for freedom has been integrated in grade 5 and 6 chapters, and especially the history of Maratha warriors. So here we are bringing you the history of Shivaji and his dear and endeared Subedar Tanaji. And there is a question or a conflict that has been explored in this story. Watch out and watch well, because we're going to come back to you with some critical thinking questions. Presenting to you Tanaji Malsure and Shivaji. And you can turn your video off the same way to create a virtual stage, and go on mute and say hi, non-video participants. You can put your video off because Tanaji, Shivaji की entry होने वाली है. सब लोग अपने videos off कर लीजिए. अरे गड़ाला पर सिंगरा video off. गड़ाला पर
सिंगरा। हो गया मिश्रा, अपना वीडियो ऑफ करिए। यस मामा, ऑफ कर दीजिए वीडियो। शिवाजी महाराज कैसे आएंगे? ये कहानी है मराठा के एक सूबेदार और शिवाजी महाराज की। Shivaji was a great leader whose dream was to unite India under Swarajya. Maratha were the only ones with a naval force in the entire of India. शिवाजी के वो सूबेदार जिन्होंने बड़ी जाबाजी से अपने स्वराज्य के लिए, शिवाजी महाराज के स्वराज्य के लिए लड़ाई लड़ी, उनका नाम था तानाजी मालुसरे. Tanaji was one of the most valued warrior in Shivaji's army. तानाजी का नाम सुनते ही बड़े बड़ों की रूह कांप उठती थी. तानाजी ने स्वराज्य के सपने के लिए बहुत कुछ दांव पे लगा दिया था. एक दिन कोंडाना किले पे फिर से कब्जा करने का मौका मिल गया था, लेकिन तानाजी के सामने एक बड़ा सवाल था. देखते हैं कि वो सवाल क्या था. महाराज, ये कैसा सौतेला व्यवहार है. कोंडाना पे हमला हो रहा है और तानाजी को इसकी कोई खबर नहीं. तान्या, तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने बेटे और पति के साथ रहो. रायबा का विवाह होने वाला है. जानकी तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है. तुम्हें उनके साथ होना चाहिए. ये ही है तुम्हारा कर्तव्य. ये है तुम्हारा सच्चा धर्म. अभी तान्या, तुम्हें जाना होगा. लेकिन महाराज, बाबा, बाबा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? आप जा रहे हैं, मेरी शादी छोड़ के जा रहे हैं? आई, ये क्या है? आप कैसे जा सकते हैं? रायबा रायबा रायबा, तुम चिंता मत करो. मैंने जानकी से बात कर ली है. शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है, बहुत अच्छे से होगी. नहीं और मैं बाबा, लौट कर भी आऊं. नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते. आप बिल्कुल नहीं जा सकते. आई सांग ना तू. रायबा, समझने की कोशिश करो. मेरी भी जिम्मेदारियां हैं अपने देश की तरफ, और इस वक्त ये मेरा धर्म नहीं है यहां रहना. नहीं बाबा, बाबा, रायबा से वादा तो किया कि मैं लौटकर वापस आऊंगा, लेकिन अपने देश, अपने स्वराज्य की तरफ भी वो वादा है. ये कैसा धर्म संकट आ गया है कि देश के साथ रहूं, अपने परिवार के साथ. और इस तरह तानाजी के सामने एक पेचीदा सवाल खड़ा हुआ, एक धर्म संकट खड़ा हुआ कि वो अपनी बेटी की शादी में रहे या शिवाजी की बात मानकर आगे जाए. आइए देखते हैं इन तीनों का जो धर्म संकट है, वो आप लोग कैसे इनको मदद कर सकते हैं. तानाजी ने जो किया वो सही था या गलत? शिवाजी ने जो किया वो सही था या गलत? रायबा ने जो किया वो सही था या गलत? आइए जानते हैं आप ही लोगों से. So I'm going to now invite audience, somebody here, to please share with us. What do you think is the struggle here? Please, somebody can come on the video or unmute yourself and tell us what is the struggle here. Who is struggling the most according to you? Please share with us. Yes, you can come on video. आप लोग बात कर सकते हैं, जो भी भाषा, जो भी आपको भाषा ठीक लगे. मराठी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, any language. What is the struggle? Yes, Zubeda, thank you, Priyanka.
So what is the struggle and who is struggling the most? आपको क्या लगता है? हाँ, सृजन या रुचि? Tanaji is struggling the most. Yes. Okay. Janvi, please, can you tell us why do you think Tanaji is struggling the most? Please बताइए. क्या स्ट्रगल किसका सबसे ज्यादा है? तानाजी का है तो क्यों है? और उन्होंने जो करा क्या वो सही किया कि अपने बेटे की शादी he left the ceremonies of his son's wedding and he went on to capture the fort and help the army. Kunal Jeet is saying all are struggling the most. Good. We want such perspectives. We don't want only one perspective. Yes, Kaisa says Tanaji is struggling the most. Okay. So how can you please talk to Tanaji and speak to him? Would somebody like to come and speak? Yeah, I'll like to speak. Yes, I please. feel, yeah, both Tanaji and his son are struggling. It's just that the perspectives are different. The son is thinking like a son, and it is struggle that his father is not going to be there during the ceremony. Whereas Tanaji's call is much bigger, which is like he's thinking of a perspective that I am the son of the land. I need to save my land first. Everything comes afterwards. So it's a different of perception between both of them, but everybody's struggle is equal because you own up your struggle. Wow, well said. You own up your struggle. Thank you. May I know your name, please? I wasn't able. Yeah. Okay. Great. So we have Priyanka. Thank you. Is there, and Kunal? You also said please speak. And Advika has a very different point of view. Raiba is struggling the most. That is beautiful. This is a rich initiation of a lot of perspectives here. Wonderful. Priyanka, would you like to share? Yes, we also want children to share their perspective. Vihang, Priyanka, Jay. Yes, what do you think, kids here? Yes, please share. Vihang, you can also share. Unmute and share. Priyanka, can you speak? Yes. Yes, I can. Yes. Share. Who is struggling? Basically, I think all are struggling because they are staying muted. They're staying muted. Oh, okay. Secondly, if we mute ourselves for one time, then unmute ourselves, we can't unmute ourselves. Yes, Priyanka, I think this is a great agenda. We can make a forum theater on this. Kids' voices should be heard. Kids' voices should be heard. What is this? We will amplify your voice, Priyanka. And we mudda aage leke jayenge. Thank you. Thank you. Anybody else? Yes, Kunal. Yes, you can speak, Kunal. Yes. Kunal, Preetam ji, can you unmute Kunal? He has something to share. And Vihang, you can unmute Vihang. The child is here. He would like to share. Let's have children's voices also. Educators, parents, everybody's voices here. Kunal, yes, you can speak now. Yeah, good afternoon, ma'am. Yes, please. मैम मेरे अकॉर्डिंग तीनों ही अपने अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहे थे। सबसे पहले राइबा, क्योंकि वो लड़के थे और उनको ये था कि शादी जिंदगी में एक बार होती है और उस टाइम ही मेरे फादर नहीं होंगे। Yes, बहुत अच्छे। दूसरे में तानाजी, उनको ये था कि ठीक है शादी तो हो जाएगी मेरे बिना भी, लेकिन मेरा जो फोर्ट है वो कब्जे में रह जाएगा, इसलिए उनको ये था कि मातृभूमि के लिए जो उनका प्यार था। बहुत अच्छा जी। तीसरा शिवाजी, वो दोनों तरफ से परेशान थे। एक तरफ तो उनको ये परेशानी थी कि उनका जो फोर्ट है उस पर कब्जा हो जाएगा, और दूसरा कि वो जो उनका सबसे बड़ा सिपाही सलार है वो खुद अपने बच्चे की शादी में नहीं हो पाएगा मेरी वजह से। तो हर एक का अपना अपना स्ट्रगल था, और ये मेरा मतलब पर्सपेक्टिव है। मैं तो आपको कुणाल जी, आपने बहुत 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 अच्छा बोला, एक बहुत क्रिटिकल थिंकिंग और लेके आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव वन लास्ट पर्सन शेयरिंग, somebody like to share? Vihang is typing, looks like. Yes, I saw. Padma, did you speak? Would you like to speak? I saw your hand. So Preetam ji, you have to unmute Padma ji. She has, Anita says it's the same as Kunal sir, all have their equal struggles, nothing more, nothing less. So that means in a child's life, it is also the teacher who's struggling, the parent who struggles, and the child. All three, it is not just one. So every struggle is important. Yes, we only feel at one side. Yes, Padma ji, over to you. हाँ हाँ, मैं हिंदी में बोलूँगी। जी प्लीज। तीनों ही जिस तरह से तीनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन यहाँ पे जिंदगी के लिए नज़रिया ये देखने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पे तानाजी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हैं इस मामले में, और उनके लिए जिस तरह कहते हैं कि आवर वर्क शुड बी आवर वर्शिप, उस तरह से वो मातृभूमि ही उनके लिए सब कुछ थी। तो
रायमा का उनके लिए उतना फर्क नहीं पड़ रहा था जितना कि रायमा का, क्योंकि उसके हर छोटी छोटी चीज में उनके पेरेंट्स साथ में थे और यहाँ पे वो नहीं रहेंगे, जो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रायमा का स्ट्रगल ज्यादा था इमोशनल। बहुत अच्छा। आप क्या हेलो। करती हैं मैम? पद्मा जी आप पढ़ाती हैं या हाँ, मैं पढ़ाती थी, फिर अपना प्री स्कूल भी खोल के रखा हुआ अभी है। आपको बच्चे का स्ट्रगल बहुत नजदीकी लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत हेलो। सुंदर। इसके लिए तालियां। यस श्रीजन जी, यस प्लीज बोलिए। जी नमस्ते, मैं नीलेश बात कर रहा हूँ, मेरे साथ प्रगति है। अच्छा जी। और ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मुझे ये लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो है, मेंटल स्ट्रगल वी कैन से, वो शिवाजी महाराज जी का है। देखिए, अगर उनके पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखते हैं तो वो भले ही राजा है, लेकिन वो अपनी प्रजा के लिए उतना ही प्यार रखते हैं जितना कोई पिता एक बच्चे के लिए रखता है। तो उसके लिए रायबा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसके लिए तानाजी मालुसरे भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम बीइंग रूलर, ही कैन नॉट एवरी टाइम रिस्क हिज ओन लाइफ। तो इसीलिए खुद तानाजी मालुसरे कहते हैं कि मुझे आप आगे बढ़ाइए, मैं आगे बढ़ता और मुझे ये काम करने दीजिए। ऐसा नहीं था कि शिवाजी महाराज ये खुद नहीं कर सकते थे। जी जी। लेकिन खुद तानाजी मालुसरे आगे आके उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मुझे करने दीजिए, आप इसमें मत जाइए क्योंकि इसमें रिस्क है। तो मुझे ये लगता है कि इसमें शिवाजी महाराज जी का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा कि उनको सिर्फ एक नहीं, दो लोगों के लिए वो परेशान हो रहे हैं, और साथ में बाकी जो फोर्ट के लिए जो परेशानी है वो तो है ही। बहुत सुंदर। आपको हम लोग हायर कर सकते हैं सीबीसी पूरे एक करिकुलम लिखने के लिए। बहुत सुंदर तानाजी पे। अच्छा, मुझे जल्दी से एक सवाल बताइए, कौन सा, विच फोर्ट वाज दिस? कैन समबडी नेम द फोर्ट? कोंडाना। कोंडाना, बहुत सुंदर। और किसी को पता है विच ईयर, कौन से साल में ये हुआ था? कोई गेस कर सकता है? किसी को पता है? लास्ट क्वेश्चन। बताइए बताइए। हाँ हाँ, चैट पे कुछ लोग टाइप कर रहे हैं। हाँ, गूगल कर लीजिए, गूगल गूगल गूगल। 1670, yes, okay, 1670, okay, thank you. बहुत सुंदर। So over to you. So this was just a glimpse of what we do in a session of TI, Theatre and Education. Over to Kusum ma'am. Yes, thank you so much. So yes. Yes, so probably the participants would like to say hello to Shivaji Maharaj and to Tanaji. So can they just come and say? Yes, I would love to have them have a conversation too. क्या अच्छा लगता है खाने में, उनको क्या नहीं लगता, ये भी आप पूछ सकते हैं। वो भी बोल सकते हैं। हाँ, ये हमारी TI का प्रोसेस है। Priyanka now, yes, very good, beautiful. She has written that everyone struggles, even a tree struggles. Beautiful. Afforestation, deforestation, no poaching of animals. This is what happens in a TI session. How children link their life skills with what is happening in the curriculum. Beautiful. Let's all clap for this little girl here. Wonderful, wonderful. Very good. So Shivaji Maharaj, please आइए, और रायबा जी और ताना जी प्लीज आइए, आपसे हमारे दर्शकगण बात करना चाहेंगे। They would like to have, आ गए हैं। Yes, शिवाजी जी भी हैं हमारे साथ। ये हैं, शिवाजी आ गए, कुछ पूछेंगे इनसे। बड़ी अच्छी माला पहनी उन्होंने। और यहाँ पे हमारे साथ सूबेदार हैं। सूबेदार जी काफी थके हुए लग रहे हैं, अभी अभी चढ़ाई करी है। सूबेदार जी कुछ बात करिए, बच्चे आपसे बात करना चाहेंगे, या बड़े लोग भी हैं, एजुकेटर्स हैं। बहुत अच्छा हमारे पास व्यूज आ रहे हैं। तो ताना जी, अभी आप लड़ाई करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे? सॉरी, आप फिर से बोल सकते हैं एक बार? आप युद्ध करने जा रहे हैं उदय भानु? हाँ, ये युद्ध की जो डिसीजन है बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत डिफिकल्ट है और बहुत सारे चैलेंजेस भी है। कोंडाना गढ़ पे कब्जा तो करना है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। कोंडाना गढ़ की जो चढ़ान है बहुत ही स्टीप है, फ्लैट है। ऊपर कैसे चढ़े, ये भी एक चुनौती है। That's a challenge that we have to defy. We have to learn the physics of how you have to climb a steep. So we are using something called as monitor lizard. आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है बाय द वे। हाँ, हम एडाप्टेशन करते हैं लोगों के हिसाब से। यस, मॉनिटर लिजर्ड, यस। और आपको खाने में क्या पसंद है ताना जी? हम तो यहाँ की रोटी खाते हैं। वाह। और सब्जी खाते हैं, यही हमारी ताकत है। वाह। तो आप पिज्जा नहीं खाते मतलब?
हाँ, हमारे वक्त में पिज्जा नाम की कोई चीज नहीं थी, हम रोटी से ही रोटी को ठीक है। पिज्जा समझ गए। और कोई पूछना चाहेगा ताना जी से? मंच खुला है एकदम, आप पूछ सकते हैं। रायबा भी है यहाँ पे, एक बच्चा उनका, उनसे भी पूछ सकते हैं। अनीता जी, मैम, वुड यू लाइक टू प्लीज शेयर समथिंग? Yes, you went on. Yes, yes, yes. You can speak now. Good afternoon, all. Good afternoon, Kusum ma'am and team. I'm not aware about the other members over here. Yeah. And fantastic, the act was. It was enacted so very well. And I just don't know how to praise all of you. I just am having goosebumps because the way Tanaji is still, like as a statue he's standing, it's just so amazing. You enacted so well, my dear. And even Shivaji Maharaj, all of them. I mean, this is something which is actually needed for the children today. A very, innovative style and techniques which has to be taught. Even history is made so interesting. This is the first time which I have attended such a session, and I'm just, it's just awesome. I have no words to say. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, over to you, ma'am. Actors, you can release. Yeah. Yes. So we didn't know what Shivaji Maharaj liked to eat, so we just got what Tanaji like. शिवाजी एक्चुअली म्यूट पे है, उनको किसी ने म्यूट कर दिया है। कोई बात नहीं, तो वो मॉनिटर लिजर्ड इसलिए बनते हैं क्योंकि वो देखिए बच्चों आप मॉनिटरिज्म आपको दिखा सकते हैं कैसे बनाते हैं। मॉनिटर लिजर्ड है आपके पास? हाँ, रायबा लेके आओ मॉनिटर लिजर्ड। मॉनिटर लिजर्ड है तो दिखा दीजिए सबको। रायबा, हाँ रायबा आपको, हाँ कहाँ पे? रोशन, यस रायबा। तो पिज्जा खाने से आप मॉनिटर लिजर्ड नहीं बनेंगे बच्चों, आपको रोटी सब्जी दाल चावल खाना है, तो देन यू बिकम नाइस एंड स्ट्रॉन्ग। ओके रायबा, रायबा थोड़ा मॉनिटर लिजर्ड के बारे में बताइए, क्योंकि आप ही बाबा सूरज बान जी से लेते हैं, बताइए, जो कि उनके भाई हैं। आई थिंक वो म्यूट पे हैं। तो मॉनिटर लिजर्ड जिसके बारे में बात हो रही है, ये एक तरफ का प्राणी है जो कि तानाजी, जो मेरे पिताजी है, उनका बहुत खास है। वो एक तरह का फैमिली मेंबर है हमारा। हाँ, तो ऐसा भी बोलते हैं कि मतलब तानाजी जो है, मेरे पिताजी जो है, उनकी वो दूसरी वाइफ है। हाँ, तो ऐसे चिढ़ाते हैं उनको। तो बहुत प्यारी है उनके लिए। और जब भी वो कोई चैलेंजिंग या कोई मुश्किल समय आता है, जब कोई बड़ा फोर्ट चढ़ना होता है, तो वो किले पे इसे जरूर लेके जाते हैं, तो ताकि वो हमारे जो भी सैनिक है वो उसके मदद से वहां ऊपर तक, ऊंचे जितने भी ऊंचे फोर्ट हो, किले हो, वहां तक वो पहुंच सके। तो हमारे लिए ये देखिए हमारी मॉनिटर लिजर्ड। हाँ, इनका कोई नाम था रायबा? आपके पिताजी ने इनका कोई नाम रखा था? हाँ, इनको घोरपड़ बोलते थे। हाँ, घोरपड़। यशवंती। ओ यशवंती, यस, इनका नाम था यशवंती। शिवाजी बोल रहे हैं, हाँ शिवाजी को सब पता है। शिवाजी जी थोड़ा बताइए, यशवंती आपके पीछे है, देखिए सब लोग, ये ऐसी थी जैसे आप पोस्टर देख सकते हैं शिवाजी महाराज के पीछे, और उसको ऊपर चढ़ाया गया था, फिर वहां रस्सी डाली थी, बिकॉज फिजिक्स है ये, आप ऐसा स्टीप फोर्ट नहीं चढ़ सकते। आपको उसने जाके वो ऊपर गई, वहां रस्सी गाड़ी, और फिर सब सैनिक ऊपर चढ़ पड़े, और आधे सैनिक कल्याणी द्वार से आए, जो कि दूसरा एक दरवाजा था। तो दोनों तरफ से मुगल सेना को घेर लिया गया। तो बहुत सुंदर है, कभी आपको मौका लगे तो हम आपको पूरा प्ले के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो शिवाजी जी थोड़ा जल्दी आके बताइए, लोग आपके लिए विचलित हैं, प्लीज आप बताइए आपको खाने में क्या पसंद है, थोड़ा आपको मतलब कोक पेप्सी क्या? कैसी बातें कर रही हो? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। yes. महाराज हम तो सब कुछ खाते हैं, हमारे महाराष्ट्र के राज्य में सब मिलता है और हमें उसका फक्र है। आज की तारीख में भी महाराष्ट्र की जमीन को सबसे मूल्यवान माना जाता है। मराठा राज में उसने क्या नहीं किया। तो हमारे ऑडियंस को थोड़ा मराठी में कुछ बता दीजिए, उनकी लोकल लैंग्वेज, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर भी हमारे सीबीएसई का पार्ट है।
तो कुछ मराठी में आप बता दीजिए कि आप क्या कहना चाहेंगे तानाजी के बारे में। आपकी जो मराठा वॉरियर सेना है वो ओनली नेवल सेना थी इंडिया की एक टाइम पे। प्लीज कुछ संदेशा। बिल्कुल, ये मुझे बहुत दुख होता है कि मराठी में बोल सकते हैं। Yes. माझा गड आला पर सिंह गेला, माझा गड आला पर सिंह गेला, ते दिवस मी कधीच विसरणार नाही. कसा माझा तान्या त्याच्या मुलाचं लग्न वेळी गेलं आणि दुःख आहे मला. माझा तान्या गेला, माझा तान्या गेला. वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। हर हर महादेव। तो देन हर महादेव। यस, और हम आगे बढ़ते हैं। So thank you all audience and thank you participants. As with any new initiative, जैसे ये हमारा एक initiative है, there are a number of factors that must be in place. So जैसे हमें आज हमने देखा कि ये it is not a very simple adaptation. थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, but it is possible, right? So it is we can say that with arts integration, high quality professional development is essential. So of course, teachers don't need to be artistic to be able to use art integration. They just need to learn some of the fundamentals, so they are better able to think of ways to merge art concepts with other content, right? So for example, knowing the basic elements of design such as emphasis, balance, contrast, and repetition enables a teacher to teach her students how to create more informative photo designs as well as teach linear equations. So when we come here next time to y'all, we can do something on linear equations on mathematics of what I'm talking about design. So parents, their rapidly growing understanding of children, their thoughts, their feelings, the very process of making art allows them to give image. आपने देखा how they can process image, they can process word, sound, or movement to something that is often intangible. That is what young children do every day. Now, children, do you know you're born artists and scientists? Well, why do I say that? Because children explore the art with both a creative and a scientific eye. Do you know the artist in you searches for the creative expressions and the scientist figures out a way to do it? Parents, our role as teachers, parents, and community is to provide them with material and inspiration and then stand back and let them go. Please reflect on this. And as I always quote, as humans, we are a combination of an emotional mind and a rational mind. These two minds work in tight harmony to create our experiences of life. Activities in the arts invite children to play with the balance of head and heart. There are no wrong answers in a creative activity. Any risk-taking is definitely encouraged. Through improvisation and experimentation with arts in a non-judgmental environment, children learn to be more about themselves and their world. So think about this: art integrated learning, a pedagogical tool in education. Just like how you saw a few children giving sharing the experiences and of how Priyanka was able to talk about it as well. So we are very, very happy that as parents and as teachers and as children, you all have participated. So thank you all participants, everyone from the Hello Kids and Riverstone schools, Mr. Preetamji and his family for holding the space along with us. Thanking you, Chetna. Thanking you, Suraj, Viral, and Roshan for such a beautiful integration. We can all be reached through Preetamji for more. Till then, stay home and stay safe. Namaste. नमस्ते। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी दोस्ती का गाना करेंगे और फिर जाएंगे, बिकॉज ऐसे हम जाने नहीं देंगे। ओके, सो एक लाइन का गाना है जेम्बे के साथ। वी विल बी ऑन जेम्बे एंड यस, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सब लोग थोड़ा सा खड़े हो जाओ।
yes, 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 yes. So गाना है, आप मेरे साथ गा सकते हैं या मेरे पीछे गा सकते हैं. सब लोग, बच्चे, बड़े, सब लोग जुड़ जाए. Everybody, please join me. And 1, 2, 3, 4. हमारी दोस्ती, हमारी दोस्ती थोड़ी और बढ़े, थोड़ी और थोड़ी और बढ़े, बढ़े, थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी और बढ़े. थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और बढ़े. बस यही गाना है, इसको थोड़ा जोश से गाएंगे. With little more energy. Unmute, unmute, unmute. Yes, Everyone, किसी ने अभी unmute. बोला जय भवानी जय शिवाजी. Yes, तो वही जोश में. Yes. So 1, 2, 3, 4. हमारी दोस्ती थोड़ी 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 और बढ़े, थोड़ी और बढ़े, अरे थोड़ी और, अरे थोड़ी और, अरे थोड़ी थोड़ी बढ़े, थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और बढ़े. यस, ये दोस्ती बढ़ाते रहिए बच्चों के साथ, अपने साथ और ये एजुकेशन सिस्टम के साथ. बहुत ब्यूटीफुल गाइडलाइंस हैं सीबीएसई की एंड ब्यूटीफुल टाइम. थैंक यू कुसुम मैम, थैंक यू प्रीतम जी, एंड थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. Thank you, everyone. It was a wonderful session. Thank you, Kusum madam. Thank you, Chetna, Viral, Suraj, and Roshan. It was amazing, and I have taken some of the videos which I'm going to share it very soon. And I request everyone to do comment on that video and the link. So it was an amazing start with the amazing finish with a lot of learning. And thank you to Padma madam, Priyanka, and Nilesh for sharing that understanding to the art integrated into our curriculums. So let's hope for to stay connected and to come with more sessions again and again. Thank you all. Have a great Sunday ahead. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.